God doesn't look at the scrap. You know, when the old cars, vintage car manta, old cars, old cars, they come. So the buyer, what he does, he doesn't see the old car. He sees the new car after polishing and all. What car he will design. He brings your old car with whatever amount you ask him. He will pay you and take that old car. But in his mind, what is there? That new car, polished and all, like factory designed. Like that God sees us. हमका देव तो हो पोईता वो पुराना गाड़ी रहता है ना स्क्रैप यार्ड में, वो ऐसा वो विंटेज कार. ओके, दैट वाज व्हिच वन वाज वोल्क्सवैगन का पहला का वो मॉडल, वो खटारा जैसा पड़ेला रहता है ना. तो हम वैसे रहता है, मगर भगवान वैसा नहीं देखते हमको. वो देखते हैं अभी पॉलिश मारेगा, उसको ये करेगा वो करेगा, वो हमको खरीद के लेता है. गॉड डजंट लुक, परमेश्वर हमको हमारा ऐसा स्क्रैप नहीं देखता है हमको. वो देखता है जब पॉलिश मारेगा. जब वो पॉलिश मारता है ना, हमारा काम क्या है? उसको देने का पॉलिश मारने के लिए. दुख होएगा ये जब निकलता है ना, सब दुख होता है, उसको देने का पॉलिश मारने के लिए. उतना ही. व्हाट वी नीड, ही नीड्स अस टू सबमिट व्हाइल ही इज पॉलिशिंग अस. I want you all to know there is hope only in one person, that is in Yeshua. We'll go to Acts, the book of Acts 14:8. Now we'll see. ये हम देखते हैं ना, हम कितने लोग को पता है ये प्लेनेट है ना. प्लेनेट क्या बोलते हैं हिंदी में? ग्रह. वो सब कितना प्लेनेट है? सैटर्न, मार्स, सुना है? सैटर्न, मार्स कितने लोग ने सुना है? How many of you heard Jupiter, Saturn? These are all names of Greek gods. Saturn is Zeus. Zeus is a very famous Greek god, and there is lot of paganism in this religious system also with regards to their gods. So we will see one small place where this thing is spoken about. So we'll see in Acts 14:8. Okay, just remove Acts 14:8. Okay, I'll read. And they said a certain man in Lystra, okay, impotent in his feet, being crippled from the mother's womb, who never had walked. Okay. So what is basically saying? I'll read it again. He's saying there was a certain man at Lystra, impotent. Impotent is nothing but he was weak or unable to walk. He was being crippled from his mother's womb. Who had never had walked. Okay. Now what happened, we'll see. The same had heard Paul speak, who steadfastly beholding him and perceiving that he had faith to be healed. Okay, what is saying? Then heard Paul speak, who steadfastly beholding him and perceiving that he had faith to be healed. Okay, said with a loud voice, stand upright on thy feet. And he leaped and walked. And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, the gods are come down to us in the likeness of men. What happened is that, and they set a certain man at Lystra, impotent. Impotent means weak or crippled in his feet, being crippled from his mother's womb, who never had walked. The same heard Paul speak, who steadfastly beholding him and perceiving that he had faith to be healed,
said with a loud voice, "Stand upright on thy feet." And he leaped and walked. And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, "The gods are come down to us in the likeness of men." लिस्त्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वह अपने पैरों से अपंग था। वह जन्म से ही लंगड़ा था। चल फिर तो वह कभी नहीं पाया। इस व्यक्ति ने पौलुस को बुलाते हुए सुना। पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और देखा कि अच्छा हो जाने का विश्वास उसमें है। सो पौलुस ने ऊंचे स्वर से कहा, अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जा। सो वह ऊपर उछलता हुआ चलने फिरने लगा। 11 पौलुस ने जो कुछ किया था, जब भीड़ ने उसे देखा तो लोग लुकाउनिया की भाषा में पुकार कर कहने लगे, हमारे बीच मनुष्यों का रूप धारण करके देवता उतर आए हैं। हाँ, वो क्या बोला? मनुष्य के रूप में देवता आए ना? हाँ, देवता है। ओके। लिस्त्रात एक ओफांगुळ मुनीस बसून असलो। होय, मातशें व्हडलें न्हू? तो जल्मान तोंटो जावन केन्नाच चलूंक नासलो। पावलू प्रवचन करतालो ते ताणें आयकलें। पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका भावार्थ आसा तो पळोवन ताणें व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव। आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो। पावलून केल्लें ते लोकांचे उपरंजीन पळना फुडें लिकान्यूचे भाशेन तांणी व्हडल्यान म्हणलें, मनशाच्या रूपान देव आमचे मदें देंवल्यात। हाँ, ये मिलाग्री पळोवन कितें ये म्हणूंक लागले, मनशाच्या रूपान देव देंवले म्हणून। एक ब्रदर ने बोला था, वो जब प्रीच करने गया तो कुछ चमत्कार हुआ उनके साथ। तो वो लोग क्या बोलने लगा, आप महादेव है। तो पता नहीं ये वैसे ही कहानी है। तो ये अभी क्या बोल रहा है, ये हीलिंग किया, मिरेकल, he healed that man from his sickness, from his crippleness. And now all the people came and what they said in the speech of Lycaonia, they said the gods are come down to us in likeness of men. देव देवला म्हणतात मनुष्याच्या रूपात। हाँ, भगवान आया है मनुष्य के रूप पे, ये बोल रहे हैं यहाँ। हाँ, और अभी देखो, now see on 12. And they called Barnabas Jupiter and Paul Mercuris because he was the chief speaker. ये जुपिटर मर्क्यूरिस क्या है? ये प्लेनेट है। ये प्लेनेट किसने नाम दिया? ये जो ग्रीक लोग है ना, these Greek people, they were scholars in every area in physics. All their Greek names are there. They were scholars. They invented most of the things. They discovered planets. So all the planets' names were given by the names of their gods. So who is this Jupiter? In Greek, if you see what is Jupiter is Zeus. Zeus. Jupiter or Jove, the supreme deity of the Greeks, is a supreme god. And Mercurius also is a god. He's a messenger of the Greek deities. He's one of the messenger gods. So where these planet names have come from, they are gods. They are gods. So now what they called Barnabas को वो लोग क्या बोला है? जुपिटर। और पौलुस को क्या बोला है? मर्क्यूरिस। Because he was a chief speaker, ये बात कर रहा था, इसलिए उसको मर्क्यूरिस नाम दिया। Now the chief priest of Jupiter means that the priest of Jupiter means the priest who were worshipping Zeus god, which was before the city, brought oxen and garland. Oxen म्हणजे गाय आणि garland means all flowers unto the gates and would have done sacrifice with the people. Which when the apostles Barnabas and Paul heard of, they rent their clothes and ran in among the people crying out,
Crying out means screaming. And saying, sirs, why do ye these things? We also are men of like passions. Like passions are similarly affected. Like how you are affected, you are getting sick. Like that I am also getting sick. How you are getting tense, I am also getting tense. Like passion, we are also men of like passion with you, and preach unto you that ye should turn away from these vanities unto the living God. Turn away from these vanities. What are vanities? What are vanities? Vanities are all these useless things unto the living God, which has made the heaven and earth and the sea and all the things that are therein. Yeah. बार्नाबासाक ताणी जिओस म्हूण नांव घालें. तुवें सारकें म्हणलें. कितें म्हणलें? जिओस न्हू. हय. हेणें कोंकणी ग्रीक नेम, ग्रीक नांव. हांगा ज्युपिटर म्हणटा. पूण आमकां गोमोन येता हें म्हणून की हे प्लॅनेट ज्युपिटर इन ग्रीक इज जिओस. इट्स अ जिओस. इट इज देयर गॉड. जिओस गॉड. मागीर पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हेर्मेस म्हूण नांव दिलें. कितें हेर्मेस. हेर्मेस. हेर्मेस इज द ग्रीक फॉर मर्क्युरी. हेणें सारकें नांवां सारकें घेतलें हे बायबलीन. म्हणजे एक्चुअली हांव स्वता सांगता कोणा न्यू आहा तांकां दीस हे ट्रान्सलिटरेशन म्हणटा. नेम चेंजींग करूंक जायना. नांव तुजें नांव. पॉल जाल्यार पॉल. पॉल मागीर पावलूस आनी मागीर आनी कितें जावंक जायना. पॉल इज पॉल. Peter is Peter, not Pedro, not Petros. So it should be like that. So here is recorded. Now they are taking the names rightly. Mercury is Hermes. Magir. शारा फुडें आसलेल्या देवसाच्या मंदिराच्या याज्ञिकान हार घालून नेटयल्ले पाडे दारवट्याशी हाडले आनी लोकां सांगाती तो येवन भेटोवंक सोदतालो. म्हणजे कोणाक भेटोवंक सोदतालो? हेंचे फुडें हेंका भेटोवंक सोदतालो. कित्याक तांकां दिसलें तो देव येयला म्हणून. हे देव येयला मनशाच्या रुपान. आतां तांकां भेटोवंक सोदता. हें आयकून बार्नाबास आनी पावलू दोन दुतांनी आपली आवरणां पिंजली. वॉट दीस पीपल डीड? हेंका गोमन येयला. अरे हे कितें कोत्ता तें? देव श्राप घालतलो म्हणून आमचेरूय श्राप घालतलो. पिजोवंक लागले कापडे. आनी लोकांशी धांवून वचून तांणी आरडून म्हणलें, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आमी फकत मनीस. आमी फकत मनीस. तुमचेच मनशा गोतीचे. पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. ह्या पोलक्या वस्तूंक पाठ करून जिव्या देवाशी तुमकां वळून हाडूंक. ह्या पोलक्या वस्तू मरे पाठ करून मरे जिव्या देवाचे कितें तुमकां वळून हाडूंक आमी आयल्यात. मागीर तर स्वर्ग आनी संवसार, समुद्र आनी तांचे भितर आसा तितली ताणेच रोसला. सगळे तेणे रोसला जिवे देवान. आमच्या फुडें कित्याक येता नमस्कार करपाक? फुलां हाडून हिंगा कित्याक सॅक्रिफायस? वॉट यू आर डुईंग दीस नॉनसन्स? बिकॉज दे आर एक्चुअली डुईंग द रायट थिंग. ते तेंचे देवाक कोत्ता. बिकॉज वी हॅव सीन in the book of Romans, those people who are new, when you are worshipping other gods, there are no other gods. Paul makes it very clear in the book of Romans, in the letter of Romans, that when we do these things, we are worshipping demons, मेले आत्मा. हम जब ऐसा करता है तो बुरा आत्मा को पूजा करता है. तो हमका खबर है दूसरे देव ना. तो ये अभी क्या बोल रहे हैं? हमारा पूजा कर रहे हैं. So now we'll see in 16. So in 16. It says, who in times past suffered all nations to walk in their own way. म्हणजे कितें? In the time past, म्हणजे in the days gone by, he suffered. He left alone. He permitted all nations to walk in their own ways. Nevertheless, he left not himself without witness, in that he did good and gave us rain from heaven
and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness. What I am bringing here now, I brought some topics which you all deem here. Mars, Jupiter, these are all not only planet names, they are gods of the Greeks. So now you all know that these are gods of the Greeks. So that is why I brought this topic here. And what these people said, what these people said, ये लोग क्या बोले, तुम लोग ये देव मनुष्य के रूप में आया है. Gods have come in the likeness of man. See, one small healing miracle they saw. Gods have come in the image of man. Okay, what it says? Acts 4:16 says, who in times past suffered all nations to walk in their own ways. आता है का? In times past, God allowed people to walk in their own ways. Nevertheless, He left not Himself without witness. त्याने witness सोडून ना. What He meant to say? In that He did good and gave us rain from heaven and fruitful season, filling our hearts with food and gladness. And with these sayings, scarce restrained they the people that they had not done sacrifice unto them. Means what? Scarce restrained means what? With difficulty they restrained. They stopped his people from doing sacrifice unto them. So after saying all these with difficulty, ते हेताले त्यांचे हे करपाक आराधना करने के लिए आ रहा था, उनका बलि चढ़ाने के लिए आ रहा था. वो इतना मुश्किल से उन लोगों को दिया नहीं उनको ये करने के लिए. किंतु जब बरनबास और पौलुस ने यह सुना तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले और वे ऊंचे बड़े शब्द से पुकार कर यह कहते हुए भीड़ में घुस गए और हे लोगों, तुम यह क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हम भी वैसे ही मनुष्य हैं जैसे तुम हो. यहाँ हम तुम्हें सुसमाचार सुनाने आए हैं ताकि तुम इन फालतू की बातों में से मुड़कर उस जीवित परमेश्वर की ओर फिरो जिसने आकाश, धरती, सागर और उनमें से जो कुछ है उसकी रचना की है. हाँ, ये बोलते आप ये फालतू बातें से क्यों भाग रहे, ये फालतू बातें के. बीते काल में जब समय बीत गया तो उसने सभी जातियों को उनकी अपनी अपनी राहों पर चलने दिया. हाँ, चलने दिया हो. परंतु तुम्हें उसने स्वयं खुद अपनी साक्षी दिए बिना नहीं छोड़ा. क्योंकि उसने तुम्हारे साथ भलाई की. उसने तुम्हें आकाश से वर्षा दी और ऋतु के अनुसार फसल भी दी. वही तुम्हें भोजन देता है और तुम्हारे मन को आनंद से भर देता है. हाँ, ये दिस इज व्हाई वी आर कॉलिंग गॉड merciful God, because though you all didn't come in the knowledge of the truth, you all didn't know the truth, you all didn't understand the truth, still God was merciful. But what will happen now? God may be merciful, but now disaster will strike you all because of your ignorance. You all are in trouble because of your ignorance. 15 to 18 I think. इश्टानो, तुम्ही कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात. आमी फकत मनीस, तुमच्याच मनशा गतीचे, पूण तुमकां आमी बरी खबर दिवंक आयल्या. ह्या पोलक्या वस्तूंक पाठ करून जिव्या देवाशी तुमकां वळून हाडूंक आमी आयल्या. तर स्वर्ग, संसार, सोमदीर तांचे भितर आसा तितलें ताणेंच रचलां. होय, आतां हांव कितें सांगूंक सोदता, हे ग्रीक लोकांक तो सांगता आनी ते ग्रीक लोक बुद्दू न्हू, हे गड्डे न्हू, हे आख्खे तुजे फिजिक्स बुकान आख्खे इन्व्हेन्शन डिस्कवरीज हेमी केलेले आहा. आनी हो म्हणटा कितें, कितें म्हणटा, ह्या पोलक्या वस्तू. हा, पोलक्या वस्तू. आतां हे कोणाक सांगता तो? गिन्यान मनशां. गिन्यान, तू कितलो गिन्यान जावं, पट्टी घातला न्हू, कितना भी समझदार होने दे,
अगर ये बंद है ना आगे तो क्या वही लकड़ी से या जलाता है खाना पकाने के लिए, वही लकड़ी से आपको प्रार्थना करता है भगवान समझ के, कुछ समझ में नहीं आएगा, वही ये पोतून वाचते ते पाठ ह्या पोलक्या वस्तू पोलक्या वस्तू. विल गो टू Acts 17:16. Now while Paul waited for them in Athens, now आता Athens गेला Paul. Tell me one thing, ये Christian population, you say Christian population, why it is the all over the world? Anybody knows? Why only Christian? It's the majority population in the world. ये Christian population क्यों ये पूरा संसार में ज्यादा है अभी तक? ये एका लागून Paul in the book of Acts, Paul went, covered the entire Macedonia, Persia, Spain. He also, they believe he went to Spain. His desire was to go to Spain. So they believe that he even reached Spain. So he's covered the entire Europe. That is why we have these people, believers all over the world. Okay, so we'll see here, when Paul went, while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him. Stirred म्हणजे किती? Irritated in him. When he saw the city wholly given in idolatry. So what happened to Paul when he went to Athens? Athens was full of idolatry. Athens is where in Greece. Greeks worshipped all these gods, Saturn, Mars. There is a Mars hill, their whole city, Mars hill, where they worshipped that god. They were all idolatry. और ये क्या मूर्ति का पूजा, पूरा देश में मूर्ति का पूजा चल रहा है. In his spirit was stirred up, irritated. पावलो आपण एथेनात तांची वाट पळोवन रावलो आणि हे शार कुड्ड्या देवाचे मूर्तींनी भरलेले पळोवन तो सगळोच कंटाळलो. हे शहर खूप आख्खे शहर कुड्ड्या देवाचे मूर्तीन भरलेले आले. पौलुस एथेंस में तीमुथियुस और सिलास की प्रतीक्षा करते हुए नगर की को मूर्तियों से भरा हुआ देखकर मन ही मन तिलमिला रहा था. Same history is repeating in the new religions. Now we'll see in Acts 19:23. And the same time there arose no small stir about the way. Now what we come to know here, what was the first group called in English? The way. The way. Okay, we'll see. And the same time there was no small stir. Stir means disturbance. About the way, about that way. That way is a group. There was no small disturbance about that way or that group. Okay, no small tumult. Tumult is confusion or disturbance. Okay. For a certain man named Demetrius, a silversmith, which made silver shrines of Diana, brought no small gain unto the craftsmen. Listen carefully. What happened? There was a certain man, Demetrius, a silversmith. Silversmith म्हणजे किती? मूर्ती करताना silver मूर्ती. Silversmith, which made silver shrines. Silver shrines is silver temples for Diana. Diana is now who? Artemis. Remember this name, Artemis. You will not hear this in English. English is known Diana. Diana. It is not Diana, it is Artemis. It is a goddess, Greek goddess, Artemis. Okay, there was a very big temple, like how you have the 7 wonders of the world. One of the ancient wonders, this temple was one of the ancient wonders of the world, Diana. It is Artemis. Shrines for Artemis brought no small gain unto the craftsmen. Craftsmen are what? Artisan. ते कोण आर्टिस्ट आहा न्हू
तांकां धाकटे घेवन हाडूंक ना पयशे खूब दुडू खूब येताले देवर लॉट ऑफ मनी कमिंग इन whom he called together with the workmen of other occupation and said, Sirs, ye know that by our craft we have our wealth. म्हणजे by our occupation we have our wealth. पैसे येतात. Moreover, ye see and hear that not only in Ephesus, but throughout all Asia, this Paul had persuaded, means had convinced and turned away much people, saying that there be no gods which are made with hands. So that not only our craft is in danger to be set at naught, but also that the temple of the great goddess Diana should be despised and her magnificence should be destroyed, who all Asia and the world worshipeth. त्या काळात सोम्याचे वाटेक लागून बरेच गडबड झाले. The way is a group, the early Christians, ये जो क्रिश्चियन बोलते हैं, early group was not called Catholic, कुछ नहीं था. मैंने बोला पिछले बार, I heard that it been 400 years after the death of Christ, this Catholicism started picking. The people started knowing them as Catholic. That I am not sure about that. But considering the earliest date, 400 years. Now during Acts time, this group was called this way or the way in English. त्या काळात सोम्याचे वाटेक लागून बरेच सोम्याचे वाटेक लागून बरेच गडबड जाताले. सोम्याचे वाटेक लागून ते सोम्याचे वाट इज द वे हे वाट न्हू बेश्टे सोम्याचे वाटेक लागून न्हू ते सोम्याचे रस्त्याक लागून न्हू द वे वॉज अ ग्रुप तेका लागून गडबड जाले. डेमेत्रियस म्हणलेलो एक श्रेष्ठ आर्तेमिस देवीची आर्तेमिस सारखे नाव ते आता हिंगा रेकॉर्डिंग सारखे कोत्ता. आर्तेमिस इज ग्रीक वर्ड उगडास धरते स्वतः ये आर्तेमिस बोल के एक क्या है गॉडस देवीची देवी रुपयाची मूर्ती पेटूला करतालो आणि ह्या ताच्या दोंद्या वरवीं ताच्या कामदारांक खूप फायदा मेळटालो. खूप फायदा मेळटालो. अभी सगळे उनको फायदा मिल रहा था. अभी अगर मैं गया रास्ते पे ये बोलने के लिए ना वो लोग मुझे मारने के लिए आएगा क्योंकि फायदा आता है उनको बहुत पैसा आता है. सगळ्या आपल्या कामदारांक आणि ताचे असलो धंदो करतल्या हेरांक ताणे एकठांय केले आणि म्हणले इश्टानो आमची जोड ह्या धंद्या वरवीं येता म्हूण तुमी जाणात. जे कितें हो पावलू सांगता ते तुमी पळयलां आनी आयकलां. मनशाच्या हातांनी केल्ले देव मनशाच्या हातांनी केल्ले देव देवूच न्हय ते आम्ही वाजला फाटी वाजला देवूच न्हय ते. वो आता सगळे परगट करता आखो एफिशियन पूरा एशिया वो बोल रहे पूरा वो एशिया में जगह वो बोल रहे ये सब मूर्ति हाथ में क्या वो भगवान नहीं है अभी यहाँ आया है हमारा वाट लगाने के लिए. एफेसांतूच न्हय पूण आख्खे आजयेच्या प्रांतांत पावलून जायत्या जाणांचे मन बदललां. मन बदलला. मन आता कितें म्हणटले ते मूर्ती कोण आता पूजा करता मूर्ती करता ते म्हणटा हांव तुझे मन बदलता ये मुझे ये कर रहा है ब्रेन वॉशिंग कर रहा है मैं ब्रेन वॉशिंग कर रहा है मैं पढ़ा रहा है आपको ये क्या बाइबल में लिखा है. मैं कोई ब्रेन वॉशिंग नहीं करे. ब्रेन वॉशिंग इसको करना है पवित्र आत्मा को आपका ये मैं नहीं कर रहा है. वो लोग क्या बोलेगा ये अभी क्या मन क्या कर रहा है बोल रहे ये बोल रहे अभी पौलुस मन उनका क्या कर रहे लास्ट मन बदलला. होय मन बदलता सगळ्याचे मन बदलला म्हणटा पावलून मन बदलूंक ना तो स्वत उलयता. मागीर आमचो धंदोच पडत म्हूण आता कितें आता तुमकां प्रिचिंग केला तेंचे धंदो वयतलो ते आनी कितें करतले इतले शिकपी मनीस तुमचे रिलीजियस सिस्टम ते आता खंयचे आनी धंदे मेळटले. धंदे मेळचे ना तेंकां ते हिंगात ते आता सगळे धंदे तेंचे हिंगात आसता. बंद करचे पडटले चर्च
पूण श्रेष्ठ आर्तेमिस देवीच्या मंदिराची इशीम बुडून वचत म्हूण भिरांत आसा हा आनी अशें आख्खे आजियेच्या प्रांतांत आनी आख्ख्या संवसारांत तिका व्हड मान आसा तो उबोवन घेतलो हा उन्हीं दिनों इस पंथ को लेकर वहां बड़ा उपद्रव हुआ। वहां देमेत्रियुस नाम का एक चांदी का काम करने वाला सुनार हुआ करता था। वह अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाता था, जिससे कारीगरों को बहुत नहीं बोला ना, वो बराबर बोला ना। जिससे कारीगरों को ये बहुत क्या हो गया ना, अभी का बाइबल वो रिवाइज करता है, रिवाइज थोड़े थोड़े बदलता है। वो नाम जो कुछ पहले नहीं था ना बराबर, वो नाम बदलता है। वो नाम मेन है, नाम बदल नहीं सकता है। वह अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाता था, जिससे कारीगरों को बहुत कारोबार और व्यवसाय मिलता था। हाँ क्या मिलता था? कारोबार, हाँ काम मिलता था। हाँ उसने उन्हें और एक काम से जुड़े हुए दूसरे कारीगरों को इकट्ठा किया और कहा, देखो लोग, तुम लोग जानते हो कि इस काम से हमें एक अच्छी आमदनी फायदा होता है। तुम देख सकते हो कि और सुन सकते हो कि इस पौलुस ने न केवल इफिसुस में बल्कि लगभग एशिया के पूरे क्षेत्र में लोगों को भड़का फुसला कर बदल दिया है। हाँ वह कहता है कि मनुष्य के हाथों के बनाए हुए देवता सच्चे देवता नहीं है। हाँ सच्चे देवता नहीं है, मनुष्य क्या था ये बोल रहा है। वो लोग क्या बोल रहे हैं? पौलुस बोल रहा है, सब दुनिया को अभी बोल रहे हैं वो मनुष्य के हाथों में क्या है देवता नहीं है, असली देवता नहीं है। कल ये लोग क्या बोलेगा मुझे, आपका इधर आके ब्रेन वॉश कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं आपका ब्रेन। वो लोग वो नहीं बोलेगा वो कितना झूठ बोलता है। इससे न केवल इस बात का भय है कि हमारा व्यापार बदनाम होगा, बल्कि महान देवी अर्तिमिस के मंदिर की महादेवी अर्तिमिस, वो याद रखो। हाँ नाम अर्तिमिस ये बहुत है, रिलीजियस सिस्टम में आया है अर्तिमिस। उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाने का भी डर है। और जिस देवी की आराधना पूरे एशिया और पूरा संसार, एशिया, ये एशिया पूरा एशिया में, ये अभी का एशिया नहीं है, अभी का भी वही मैप पे वही आएगा वो, मगर वो पूरा एशिया, एक्चुअली इट इज मेसोपोटामिया साइड, पूरा एशिया, ये टर्की बर्की सब, वो पूरा एशिया बोलता है क्या? या पूरे एशिया और संसार द्वारा की जाती है, उसकी गरिमा छीन जाने का भी डर है। हाँ छीन जाने का, हाँ जाने का डर है, उनका डर है। क्योंकि क्या भी होगा, धंधा जाएगा उनका। ऐसा ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा है, वो क्या होगा है, तुम्हारा रिलीजियस सिस्टम बंद करना पड़ेगा। जब उन्होंने यह सुना तो वे बहुत क्रोधित हुए और चिल्ला कर कहने लगे, एफिसियों की देवी अर्तिमिस महान है। हाँ वो बोला महान है, वो चिल्लाने लगा महान है।